Good morning, children. So, in the previous class, I have started the food power in the EVS lesson. Fifth in the EVS subject food power, I have explained the children. So, in that food power, what we have? Food from plants, food from animals. What we will get from food? Food अपन को किधर से आता है? थोड़े food plant से आता है. देखो क्या क्या आता है plant से? Fruits, vegetables, grains, spices. We will get from plants. झाड़ों से आते हैं अपन को food. Next, meat, milk, egg. We will get from animals. This food we will get from animals. Next, energy giving food. What are the energy giving food I have told you? Potato, rice, bread, sugar, energy. ताकत. बालानिचे food it is माने कि food, potato, rice, wheat, sugar. Next, body building. Body. अपन का body अच्छा strong बनाना, build ऐसा ताकत बताना वो तो अपन क्या खाना? Eggs, milk, nuts, fish, pulses, beans. These are the body building food. Next, protective food means अपन को किससे बीमारी से बचने के लिए अपन क्या खाना? फ्रूट्स खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना. रॉ एंड कुक्ड फूड मीन्स पका के खाए सो पका के क्या खाना अपन? राइस, चावल, दाल, मीट, కూర, మాంసము, బియ్యము, ఉప్పు, సారీ పప్పులు ఇవన్నీ వండుకొని తింటేనే అవి మనకి టేస్ట్ ఉంటాయి. So I have completed in the previous class. This still here. Now I am continuing from there. Next, food like pizza, burger, chips and sweets are not good for the body. They are called junk food. మనం स्वीट्स, पिज्जा, बर्गर, चिप्स खाते ना वो अपन के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. जंक फूड बोलते वो. ज्यादा नहीं खाना, वो लिमिटेड खाना. ఎక్కువ మంది ఫుడ్ బయటికి వెళ్తే పిజ్జా, బర్గర్లు, స్వీట్స్, ఇంకేమంటాము చిప్స్ తింటారు కదా, అవి మన హెల్త్ కి మంచిది కాదు, ఎక్కువ తినొద్దు బయట అవి. నెక్స్ట్, వాటర్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ रोल इन मेंटेनिंग ए हेल्थी बॉडी. वाटर చాలా इंपॉर्टेंट. पानी पीना अपन सेहत के लिए बहुत अच्छा है. इट हेल्प इन डाइजेशन एंड हेल्प टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी. अपन कितना पानी पिए तो उतना अपन के बॉडी में है तो बैड कंटेंट मीन बुरा अपन के बॉडी में क्या तो भी डस्ट रहता ना अंदर बॉडी के पास में. कितना पानी पिए तो उतना पानी से अपन को यूरिन मीन्स टॉयलेट में चल जाता. पानी ज्यादा पीने से पूरा बॉडी अपन को वॉश हो जाता अंदर. अपन अंदर तो बॉडी वॉश नहीं कर सकते ना, इसलिए वो पानी अपन कितना पिए तो वो पूरा बॉडी पार्ट्स में रह के अपन की यूरिन आई जब पूरा निकल जाता. మన की టాయిలెట్ లో మన బాడీలో ఉన్న చెడ్డ అంటే డస్ట్ గానీ ఏదైనా మన బాడీ పార్ట్స్ లో ఉన్నదంతా వాటర్ లో వెళ్ళిపోతుంది. ఫ్రమ్ వీ షుడ్ డ్రింక్ 8 to 10 glasses ऑफ वाटर एवरी डे. 8 నుంచి 10 glasses डेली. 8 से 10 glasses पानी पीना वो अपन की सेहत के लिए अच्छा है. मील्स. व्हाट इज मील्स? खाना. वी ईट 3 times. डेली 3 times खाते ना. डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच. ब्रेकफास्ट लाइट खाना मीन्स ब्रेड, रोटी ऐसा लाइट मॉर्निंग आवर. नेक्स्ट, लंच स्कूल में खाओ, घर में खाओ, अच्छा पेट भर के खाना खा लेना. नेक्स्ट, डिनर इज ऑल्सो ए टाइम टू ईट एट द नाइट. ब्रेकफास्ट कब करते? सुबह में करते, स्कूल को आते. लंच इन द 12 o'clock we will eat lunch. బ్రేక్ఫాస్ట్ నైట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవర్ 3 times ऑफ मील. नेक्स्ट, गुड हैबिट्स అంటే మంచి అలవాట్లు, अच्छे आदत. अपन को क्या क्या रहना चाहिए? एवरी मील शुड कंटेन ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स. सुबह में लंच में अपन टिफिन में लंच में क्या करें, डिनर में क्या करें, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करें, मम्मी वही लंच में पैक नहीं करते ना, अलग पैक करते ना. फिर लंच में घर में क्या, लंच में स्कूल में क्या क्या, फिर रात में वही रखते मम्मी, नो फिर अलग रखते ना. वैसे डिफरेंट 3 times अपन डिफरेंट खाते. नेक्स्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी एडेड हैज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी मील. अगर अपन सुबह खाते समय लंच टिफिन ब्रेकफास्ट करते समय कौन सा तो फ्रूट खाए तो యాపిల్, బనానా, తోడు ప్రోమాగ్రానైట్ खाए तो अपन की बॉडी के लिए अच्छा. మనం పొద్దున ఏమి తిన్నా ఒక ఫ్రూట్ ఏదైనా బనానా కానీ యాపిల్ కానీ దానిమ్మ పండు కానీ కొన్ని తింటే అది మన బాడీకి చాలా మంచిది. वी शुड ईट क्लीन फूड एट होम. इंట్లో अपन घर में ही क्लीन फूड खाए तो अपन का सेहत के लिए अच्छा. మనం ఇంట్లోనే ఫుడ్ తినడం, ఇంట్లో తయారైన ఫుడ్ తినడం అన్నది మన హెల్త్ కి చాలా మంచిది. we can eat out occasional but only at the hygienic places. మనం బయట ఫంక్షన్స్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా తింటాము.
కానీ ఏది మనకి హెల్త్ మంచిదో అదే తింటాం. కానీ వాళ్ళు ఏది పెట్టినా అది తినాం కదా, వాళ్ళు కూడా చూసే పెడతారు కదా. अपन फंक्शन गए तो अपन को हाइजेनिक मीन्स कौन सा अपन को हेल्थी फूड है उसमें वही खाते ना अपन. वी शुड नॉट मिस ए मील स्पेशली द ब्रेकफास्ट. ఎప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయండి, బయటికి రాకూడదు. बिना सुबह खाते की भूखी पेट से कभी भी बाहर नहीं निकलना. अगर स्कूल को रहो तुम बाहर किधर भी कुछ तो भी खा के जाना. ఏదైనా తినే బయటికి వెళ్ళాలి పొద్దున్న టైం అయినా సరే మనం కొంచెం అర్లీగా దానికోసం ఒక స్పెషల్ టైం పెట్టుకుని అయినా తినేసి వెళ్ళాలి. ग्रोइंग चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक मिल्क. इट गिव्स एनर्जी एंड स्ट्रेंथ द बॉडी. तुम लोग बच्चे है ना, बच्चे दूध कंपलसरी पीना. वो दूध पीने से तुम्हारा माइंड शार्प होता है, तुम्हारा बोन स्ट्रांग होते, तुम्हारे को ताकत आता. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील. खाना खाने से पहले, खाना खाया बाद हाथ धो लेके खाना. అన్నం ఏమి తినడం కన్నా ముందు తిన్న తర్వాత చేతులు కడుక్కోవడం ఈజ్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్. వాష్ योर माउथ आफ्टर मील. इट हेल्प अस टू प्रिवेंट कैविटी माउथ. तो लोग क्या करते, खाना खाया बाद मुंह में पानी डाल के పూరా దోకే థుక్ డాల్తే. కొంతమంది పుక్కిలిస్తారు నోరు, ఎందుకంటే అక్కడ లోపల ఏమైనా డస్ట్ ఉంటే పోతుంది, ఏమైనా తిన్న ఐటమ్ ఉంటే బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. అది ఒక గుడ్ హ్యాబిట్ ఇవ్వండి. ఫ్రూట్స్ మస్ట్ బి వాష్డ్ బిఫోర్ వి ఈట్ దెమ్. फ्रूट्स ఎప్పుడు కడుక్కొని తినాలి. फ्रूट्स कभी भी खाओ धो लेके खाना अपन, वैसे डायरेक्ट नहीं खाना. So by this we completed this lesson children. So I will give hard words and question answers in the notebook part. First we will आर यू हेल्थी? आर यू हेल्थी? यस, तुम लोग हेल्थी से है ना, तुम लोग को अच्छा ताकत है, अच्छा तुम्हारे बोन्स में है बलम ఉంది కదా. देर आर डिफरेंट फूड ईट. देर आर मेनी फूड आइटम द चिल्ड्रन लव टू ईट बट एल्डर्स से दैट दे आर नॉट गुड. तुम लोग को बहुत पसंद चीजा खाना, बाहर के चिप्स रो, बिस्किट्स रो, चॉकलेट्स रो, स्वीट्स रो, तुम लोग को खाना. लेकिन तुम्हारे से बड़े लोग क्या बोलते, नहीं ये ज्यादा नहीं खाना, उसका लिमिटेड खाना. डेली एक ही चॉकलेट खाना, उससे ज्यादा नहीं खाना. वो यहाँ पर पेज नंबर 115 में 2 बॉक्सेस दिए. तुम्हारे को क्या पसंद और तुम्हारे बड़े लोग तुम्हारे को अलाउ नहीं करते ना वो खाने के लिए, वो ये आप लिखो. ये क्वेश्चन आंसर पार्ट में लिखा था आप लोगों को. अब टर्म बुक फिनिश कर देंगे आज अपन. सो फूड फर्स्ट पिक द करेक्ट ऑप्शन. फूड गिव अस एनर्जी. इट हेल्प अस टू स्टे ताकत आए तो अपन हेल्थीली रह सकते ना. ठीक, हेल्थी ए हेल्थी. नेक्स्ट बी डैश इज एन ईटन रॉ. डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, कैरेट. नेक्स्ट सी नेक्स्ट थर्ड वन डैश इज एन एनर्जी गिविंग फूड. मीट, पोटैटो, एप्पल. डैश इज एनर्जी गिविंग फूड, पोटैटो. नेक्स्ट चिल्ड्रन नीड टू ड्रिंक डैश फ्रॉम एंड क्या खा पिए तो तुम लोग वाटर, मिल्क, जूस, मिल्क. ओके. नेक्स्ट fill in the blanks. This is the second bit, this is the third bit. Fill in the blanks. We get all the food from where we will get food, plants and animals. plants से थोड़ा आते हैं अपन को और and animals से थोड़े आते. Next dash and dash are protective food. What are the protective food? Fruits and vegetables. Fruits and vegetables. Next third one, protective food protect us from diseases. Fourth one, cooked food is easy to digest. अपन को डाइजेशन हो जाता ना, पका के खाए तो हजम होता ना, अరుగుతుంది కదా వండుకొని తింటే. The body building food help us to grow. The body building food help us to grow. Next, write a poem of 4 lines. Food we eat. The food we eat. The food we eat make us grow. Make us grow. Bad and good food we got to choose.
बैड और गुड फूड. अच्छा फूड और बुरा फूड रो अपन खाने में थे वो अपन को वी गॉट टू चूज. दिस वॉज द पोएम इन द AB एक्टिविटी जोन. नेक्स्ट B1. B1 क्या है? वी cook some food items to make them soft, trendy and tasty. Circle the food that do not require cooking and we cannot eat. बिना पका के खा सकते, बिना पका के भी तोड़ के खा सकते. क्या क्या खा सकते अपन? एप्पल तो नहीं पकाते. कैरेट भी खा सकते बिना पकाने से. ग्रेप्स, मिल्क तो ले लो, मिल्क बिना बॉयल कर लेके पी लेते. सर्कल एप्पल कैरेट, सर्कल एप्पल कैरेट grapes, milk. Okay, next, do you follow these things? Good habit. If yes, tick right. Wash your hands before a meal. Yes, that is a good habit. Tick right. Choose your food without making a noise. Yes, कभी भी खाते समय ज्यादा बात नहीं करना, शरारत नहीं करना, తినేటప్పుడు ఎప్పుడు అరవొద్దు, మాట్లాడొద్దు. Right. Do not talk while eating. माట్లాడకుండా बिना खाना खाते समय बात नहीं करना. अच्छा चूज कर लेके खाना. टिक. नॉट स्पेल फूड ऑन द टेबल. कभी भी खाना टेबल के ऊपर नहीं गिराना है. टिक राइट. डू नॉट वेस्ट फूड, इट इज सर्व्ड इन योर प्लेट. कभी भी अपन को परोसते ना प्लेट में खाना, अपन की मम्मी कितना देते अपन वो पूरा फिनिश करना. మన ప్లేట్ లో ఎంత పెడితే అంత ఫుడ్ మొత్తం తినాలి. టిక్ ఆల్ దిస్ వన్ రైట్. Okay children, now coming to the hard work. By this I have completed workbook children in the EVS subject. Now I have enough to give, just I have given the hard work and question answers on the board. Note down in your notebook. Okay children. Children, in the notebook part, first write the lesson name. What is the lesson name? Food power. This is the lesson name. First write this lesson name. Next write hard words. Hard words. What was the hard words, children? I am giving hard words. Fruits. 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 Vegetables. Meat. Milk. Grains. Body building. Protective food. Cooked. Energy. Junk food. These are the 10 hard words. Children, note down in your notebook. Next, going to question answers part. We have 5 question answers. I will give the 5 question answers here on the board. In the taboo write different classes, children. Then in the notebook write 5 question answers. Okay. Question and answer. First question. Why do we need food? Why do we need food? We need food to live. We need food to stay alive. Why do we need food? We need food to stay alive. Next.
What are body building foods? What are the body building foods? Body building food help us to grow and build our bones and build bones. Some body building food are some body building foods are pulse, beans, egg and fish. This is the second answer, children. Now, why should we drink more water? Why should we drink more water? Water helps in digestion and helps to remove harmful substances. From the body. Okay, children. Next is fourth question. Fourth question. What are the different kinds of food? Different kinds of food we need. What are the different kinds of food we need? The kinds of food, the different kinds of food we need are energy giving food, body building food, body building food and protective food. This is the fourth answer, fourth question, children. Next, coming to fifth. How is drinking milk
powerful. Milk gives energy and strength the bones. In the notebook also I have completed this lesson. By this you have completed in your term book and in your notebook also. Okay children, thank you.